Hello bachcho, let's read the question. So the question says, usually you would need to visit a national park or sanctuary to sight beautiful wild animals such as the wild boar, blue bull, spotted deer, chinkara, blackbuck, Indian hare or monkeys. Today, just go around to any agricultural field and you may find plenty of wild herbivores roaming around the grounds freely and feeding on the crops and natural palatable plants therein. When forests were abundant, ecologically sound, and self sufficient, the movement of wildlife inside the protected areas, forests in search of food, would extend no further than the buffer zone. Over time, however, the alarming rise in human population has put immense pressure on forest wealth, leading gradually to large swaths of the forest, including the buffer zone and the corridors, being converted into agricultural fields and industries and cleared for all the construction of urban zones, big dams, railway tracks, roads and highways, mining corridors, electricity transmission lines, and other development works that massively reduce forest area and shrink good quality wildlife habitats. Resultantly, as wild herbivores made to move or migrate through natural corridors from one forest to another in search of food, they found themselves in agricultural fields which are fully easily accessible feeding material. This has been gradual effect of encroachment into the homes of wildlife by humans, compounding the human wild animal conflict to boot. Exposed, such animals also come as easy prey for poachers or become roadkill. As per Delhi-based NGO Wildlife Protection Society of India (WPSI), over 1,000 tigers have been killed in the country by poachers over the last 2 decades. Over 650 instances of roadkill have been recorded in the last 5 years. So, on the other hand, wildlife outside protected areas is a great peril. On the other, farmers and local in and around the forest fringe areas are at loss due to crop damage and the danger posed to human and livestock lives. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change estimates that between 2014 and 17, one death took place every day due to human animal conflict. It is observed that the wild herbivores damaged between 15 and 50% of the standard crops in fields and may affect 50 to 75% of the total agricultural area. Hence, a balanced solution in the form of special management plan is a need of our not only to protect wildlife outside the protected areas and forests but also to safeguard human lives and life स्टॉक्स। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसका पैसेज का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए सेंचुरी या नेशनल पार्क्स में जाना पड़ता था, पर उसकी ऐसी जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड जहां खेती होती है वहां पे आप जाके देख लो, आपको बहुत सारे वाइल्ड हर्बीवर्स जो घास खाते हैं वो आपको दिख जाएंगे। जब फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे, सब चीज था, तो उनको बाहर आने की बफर जोन से जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब हम अपनी ह्यूमन नीड्स के कारण, रोड्स हाईवेज बनाने के कारण फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हैं, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स बाहर खेतों में आते हैं इन सर्च ऑफ फूड और उनको वो सबसे आसान जरिया लगता है खेतों में खाने का। एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ के हिसाब से ये पता चला कि 1,000 टाइगर्स या उससे ज्यादा मारे जा चुके हैं पोचर्स के द्वारा लास्ट 2 डेकेड, मतलब लास्ट 20 साल के अंदर अंदर, जिसमें से 650 इंस्टेंसेस, जो 650 टाइगर्स हैं वो रोड किल में भी शामिल हैं पिछले 5 साल में, मतलब उनकी रोड पे मौत हो गई। बाकी दूसरे हाथ पे ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ा लॉस है जो आसपास फार्मर्स हैं फॉरेस्ट के, क्योंकि उनका वो लाइफ स्टॉक या पूरा क्रॉप डैमेज हो जाता है जिससे वो पैसा नहीं कमा पाते। और ये भी पाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा कि 2014 से 17 के बीच में हर एक दिन एक डेथ होती ही थी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमंस और जानवर के बीच की लड़ाई की वजह से। तो यही कुछ बताया गया है, इसलिए एक बैलेंस सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है एसएमपी की, जो कि वाइल्ड लाइफ को तो बचाए पर ह्यूमन लाइफ को भी सेफ गार्ड करे। नाउ, what has been the impact of human encroachment on wildlife populations according to the Wildlife Protection Society of India (WPSI)? Option A, increase in the tiger population. Option B, decrease in roadkill incidents. Option C, reduction in instances of poaching. Option D, killing of over 1,000 tigers by poachers. तो बच्चों पॉजिटिव इंपैक्ट तो कुछ नहीं हुआ है जो उनके सर्वे ने बताया, इट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव एक ही ऑप्शन है एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज में भी लिखा है दैट किलिंग of over 1,000 tigers by poachers, शिकार।
Bye. I hope you understood it well. Best of luck.